Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। प्रतिदिन की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ उद्यन रे। उद्यन, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। वार्म वेलकम उद्यन। धन्यवाद, थैंक यू। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेख। Domestic stocks witnessed losses of less than 0.5% amid mixed global cues. Sensex ends below the 60,300 points. Nifty settles near the 17,700 level. The rupee appreciates to 82 rupees and 70 paise against the US dollar, and global crude prices rise to trade around $82.42 per barrel. मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में 0.5% से कम की गिरावट। सेंसेक्स 60,300 अंक से नीचे, जबकि निफ्टी 17,700 के नजदीक हुआ बंद। रुपया मजबूत होकर 82 रुपए 70 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर हुआ बंद और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर $82.42 प्रति बैरल के आसपास। कार्यक्रम में सबसे पहले बात शेयर बाजार की। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार आज 0.5% से कम के नुकसान के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 60,300 अंक से नीचे, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 17,700 के स्तर के नजदीक बंद हुआ। सेंसेक्स 0.36% के नुकसान से 221 अंक गिरकर 60,286 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 0.24% के नुकसान के साथ 43 अंक फिसलकर 17,721 पर आ गया। व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप इंडेक्स बिना किसी उतार चढ़ाव के लगभग सपाट बंद हुआ, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.2% की गिरावट रही। The Sensex and the Nifty today witnessed losses of less than 0.5%. Index of top 30 companies at Bombay Stock Exchange, Sensex, ended below the 60,300 points. The index of top 50 companies at the National Stock Exchange closed near the 17,700 level. Both stocks fell amid mixed global cues. The Sensex declined 221 points or 0.36% to finish at 60,286. The Nifty 50 also fell 43 points or 0.24% to settle at 17,721. In the broader market of the BSE, the mid-cap index remained almost flat and the small-cap index slipped 0.2%. In the Sensex pack, 9 companies posted gains while 21 witnessed losses. Kotak Bank was the top gainer as it rose 1.6%, followed by IndusInd Bank, which gained 1.2%. Bajaj Finance added 0.9% and Bajaj Finserv surged 0.6%. On the other hand, Tata Steel slipped 5.2%, ITC declined 2.6%, Sun Pharma and Maruti both lost 1.7% each. In sectoral indices at the BSE, 6 sectors gained while 14 logged losses. Realty sector index gained 0.8%, followed by capital goods sector which surged 0.5%. Services sector added 0.4%. On the other hand, metal sector tumbled 1.9%, the telecom sector declined 1.3%, FMCG and utilities sector plunged 1.1%. The overall breadth of the BSE trade was negative
as shares of 1,573 companies gained, while 1,916 fell. Shares of 133 companies remained unchanged. और अगर रुपए के प्रदर्शन पर नजर डालें तो विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 3 पैसे मजबूत होकर 82 रुपये 70 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में बढ़त के साथ 103.67 पर चल रहा था। उस दिन अगर हम शेयर बाजार के आज के कारोबार की बात करें तो आज लगातार दूसरे दिन गिरावट देखी गई है बाजार में और 221 अंक से अधिक की गिरावट सेंसेक्स में देखी जा रही है। तो ये जो हम देखें आज तो सेक्टर वाइज तो मेटल सेक्टर्स में काफी हमें गिरावट देखने को मिली है, ऑटो शेयरों में भी गिरावट रही है। क्या प्रमुख वजह मान रहे हैं आप? देखिए, 2-3 चीजें जरूर हो रही हैं। एक तो आपके मार्केट एक दिशा क्यूज की इंतजार कर रही है और क्यूज टिपिकली रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति क्या होगी, क्या उनकी कमेंट्री रहेगी, कितने बेसिस पॉइंट से वो ब्याज दर को बढ़ाएंगे। ये उम्मीद कई लोगों का मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाने के बाद एक पॉज आएगा, एक ठहराव आएगा, वहां पे फिर आगे नहीं बढ़ाई जाएंगी क्योंकि मुद्रास्फीति की दर काफी कम हो चुकी है और ये माना जा रहा है कई क्वार्टर्स में कि ये नीचे ही रहेगा। आरबीआई, कई लोगों का तो मानना है कि आरबीआई का जो अनुमान है उससे भी नीचे चला जाएगा, तो क्योंकि वो कंट्रोल में लगता है, तो वो एक पॉजिटिव क्यू है। पर जो चिंता की बात है, अगर मार्केट को चिंता आती है तो वो फेडरल रिजर्व, अमेरिकी फेडरल रिजर्व, वो किस दर से वो ब्याज दर आगे बढ़ाएंगे। वैसे तो 1 तारीख उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, पर आज उनके चेयरमैन जेरोम पावेल का कोई स्पीच है जिसका मार्केट इंतजार कर रहे हैं। तो ये 2 कुछ क्यूज हैं, ये 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मार्केट को डिटरमिन कर रहे हैं। इसके अलावा चीन में जो रीओपनिंग का जो प्ले है वो काफी उसकी तरफ उत्साह बढ़ा है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का, तो वहां पे एलोकेशन चेंज होता रहता है, तो उस तरफ अग्रसर हो रहा है निवेश। और इसके अलावा हमारे देश में ऑल्दो मुझे लगता है कि वो हमारे देश के मार्केट्स में वो पीछे जो घटनाएं घटी हैं, एक कंपनी समूह, एक ग्रुप के विशेष के से जुड़ी हुई, उसका एक ओवरहैंग तो है, अभी तक वो गया नहीं है, पर मुझे लगता है कि वो ऑन द मेंड है, वो उसके अभी भी इवॉल्विंग स्टोरी है वो। पर अगर आगे की मार्केट तो लीडिंग इंडिकेटर होता है, तो फॉरवर्ड वो देख के वो करता है। पर ये 2 जो क्यूज हैं मेरे ख्याल से ये काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करें। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप खबरों में जरूर पढ़ेंगे कि डॉलर काफी मजबूत हो गया, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट करेंसीज के बनस्पत, इंडोनेशिया की करेंसी, साउथ कोरिया की करेंसी, भारत, सबके करेंसी के अगेंस्ट वो मजबूत हुआ है और सिग्निफिकेंटली मजबूत हुआ। तो ये कुछ प्लेज हैं जो आपस में डिटरमिन कर रही हैं। So according to you, then there are no positive sentiments coming our way apart from Rajesh, just simply want to add, sorry to just simply want to add that the markets were quite vulnerable today because Australia is also expected to increase the rate hike, and of course, as you mentioned, Jeremy Powell's critical comments came in regarding the hike, and also there are deepening US-Sino tensions over the balloon, you may say, or whatever or factors. So these 3 factors are also contributing towards the negative sentiments in the market. Well, I think I would rather not read too much into these things because Rajesh, we have now, it's almost 2 years that we have got used to this high volatility. I mean, so we are getting used to it. It's no longer because whenever you'll typically have a volatile kind of a situation in the market going up one day and going down the next, when you're not very certain about something which is important. In this case, what's happening is interest rate in the US,
which actually determine global capital flows, which in turn influence other parameters across the globe like inflation and government response. So many things. Just because of one thing, it has a knock-on or a domino effect. So whenever you're going to have uncertainties on that will happen. Sino-US tensions have been around since the last US administration also. So that's not unless it comes to a so that doesn't seem to be the case. Now the global markets have also somehow internalized this whole conflict in the euro. I'm not saying it cannot go out of hand, but if there's a new escalation or a new area in which the effect happens, which may well be possible somewhere around the end of March, early April, because that's when the snow melts and militaries get into offensive. Apart from that, I'm not being able to see something like that. I think it's more a case of getting a cue. You want, even though it's a high risk investment compared to say debt, equity, stocks are high risk investment, you still want to see visibility of earnings. What would be the trajectory of profit? What would be the trajectory of sales? What could be the interest rate? Because that's how you're going to value your investment proposition. Tomorrow's earnings is what is the number in today's terms. That's what you want to know. So if you want to do all that, you need a little bit of certainty, or shall we say definiteness in the trajectory before you can take that risk. So on days like this, you'll have experts saying that, risk of sentiments, risk of within quotes. Then tomorrow you can just go the other side, because if there are some other commentary comes in. So this yo-yo effect will continue? Yeah, because till you see the interest rate cycle not getting firmed up in the US, because you just don't know, because just one thing is changing so much. It has already done so much. And you will find whole sets of stocks in certain markets reacting in a particular way. It's a very powerful influence. It's not the overriding influence. Sometimes local factors also come into play, as we have seen. But that is a very, very powerful influence. And of course, in our country, if we keep getting good results, some companies may not do as well, but it's okay as long as you still keep getting reasonably positive headlines out here. We should be okay. And if you look at year to date kind of comparison, I haven't seen it, but you would find that it's hardly, suppose you had invested last year around this time and gone off to sleep for a year. I mean, let's assume for a moment. You wouldn't have felt sad, like it's as if the next day you woke up and you say, okay, it's just gone down by this much, it's okay, this is India, right? So it's not as if things have that bad, but because in the last 1 year, markets have gone up, down, sideways, it's done, so much has happened. But if you had invested in the index, I'm talking about the index, it's really gone nowhere actually. So that you would see, suppose you were to see in certain sort of large cap kind of mutual funds, that's one proxy. You would see that they haven't done all that well compared to their benchmarks. I would like to add that despite a fairly normal or good budget, and good I'm putting together, the markets for the past 2 days are still behaving abnormally. Again, I'm saying abnormally means, of course, they are affected by what is happening geopolitically, and also, as you said, because of the interest rates. Why is that not having a positive rub-off on our markets? Well, Rajesh, the truth really is, I mean, that's my personal opinion. I'm sure a few other people will also agree with me that budgets have a very episodic sort of impact on the market. It's a lot of people like you and me who are sitting in the studio, we try to talk it up. But it's once the information has internalized, think about it like that. Once the market has internalized the contents of that document, it's over, it's past, it's history. Unless there is some kind of a clarification, some kind of a change that will happen. That typically happens when the finance bill is getting passed with all kinds of attendant changes, tweakings, and all the other things that happen. But when the finance bill is passed with all the changes that happen, it's never dramatically different. So what happens is once that information is out and markets have internalized it,
they will react and they'll internalize. And it's budget also has a signaling effect. So depending on the signals that have been sent, everybody's starting to make the plans, which was basically the reason why the timing of the budget had been moved forward, so that everybody can plan for the financial year. So it tends to be very episodic. Yes, some budgets may have longer term impact, and typically in a budget like this, which is focusing on capital expenditure, how well it's executed, how effective it becomes. So they play out over a period of time, these kind of expenditures. Similarly, as in the monetary policy, it doesn't, if RBI had made announcements last year in 2022, we will start seeing its results now. We're probably seeing it, and maybe in the next couple of months we'll keep seeing it. So they happen with a certain lag. Certain things have a certain lag, and certain things have a longer lag. So when we actually are analyzing these things, it's very difficult, because markets are moving up and down by the moment, and some of these things play out over months and years. So sometimes, putting it all together in terms of a jigsaw puzzle does become challenging for anyone. जी, उस दिन सेक्टर वाइज अगर हम बात करें, आज का कारोबार देखें बाजार में, तो मेटल सेक्टर हो या टेलीकॉम सेक्टर हो, ऑटो सेक्टर हो, सभी में कुछ न कुछ गिरावट हमें देखने को मिली है। ऑटो सेक्टर की खास तौर पर बात करें तो जो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स के जो नवीनतम आंकड़े आए हैं वाहनों की बिक्री के संबंध में, वो ये बता रहे हैं कि जनवरी में 14% बढ़ी है, और चाहे वो पैसेंजर सेगमेंट हो या कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट हो। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो बजट में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए जो घोषणाएं की गई, जैसे कि व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के लिए बजट में बढ़ोतरी की गई है, और लिथियम आयन बैटरी के पर इंपोर्ट ड्यूटी जो है उसमें छूट दी जाएगी। इन घोषणाओं का क्या आने वाले वक्त में आप ऑटो सेक्टर में कुछ असर देखते हैं? देखिए, असर तो पड़ेगा, पर वो इमीडिएटली आप देखेंगे नहीं, क्योंकि ये जो पूरा अगर आप कन्वर्जन कर रहे हैं, मतलब आप अडॉप्शन कर रहे हैं नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो भी कहें, नॉन फॉसिल फ्यूल मोबिलिटी, तो उसमें अडॉप्ट करने में वक्त लगता है। आपके जहां पे भी रह रहे हैं, आपके चार्जिंग चाहिए, उसका कैसे हिसाब किताब हो, कैसे अडॉप्ट किया जाएगा, तो उसका एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका पूरा हिसाब किताब रहेगा। और इसका जो एडॉप्शन है, ये इतनी रैपिडली नहीं होगा जितनी कई लोग सोच रहे हैं। ये अगर हम इसको 6-7 साल के दरमियान हम देखते हैं, तो वहां पे उस पीरियड में ये प्ले आउट करेगा, ना कि कुछ महीनों या 1 साल के अंदर। तो जहां तक ऑटो सेल्स के बारे में का सवाल है, जनवरी टिपिकली आई एम नॉट सरप्राइज, क्योंकि वो आपका नया साल शुरू होता है, तो नए साल, उस साल के मॉडल चालू हो गए। तो अगर आप दिसंबर में खरीदने वाले थे, तो आप पोस्टपोन कर देंगे, क्योंकि आपका 1 साल चेंज हो रहा है जब आप सेल करेंगे। तो टिपिकली जनवरी में स्पाइक होना चाहिए, जो कि हुआ है। और अगर नए लॉन्चेस होते हैं हमारे देश के ऑटो सेक्टर में, देखा गया स्पेशली पैसेंजर व्हीकल्स में, कि नए मॉडल से वो ड्रिवन होते हैं, तो नए लॉन्चेस अगर होंगे, इस वक्त मैं रिकॉल तो नहीं कर पा रहा, जरूर लॉन्चेस हुए होंगे, तो वो उसमें वो स्पर करते हैं। जी, और जो मौजूदा परिदृश्य है, अब कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब उसमें निवेशकों के लिए आप क्या सलाह रहेगी कि निवेशक क्या करें ऐसे परिदृश्य में, जिस तरीके से आपने पहले भी बताया? देखिए, सबसे पहले तो भेड़ चाल में ना जाएं। आपके पड़ोसी क्या कर रहे हैं, टीवी में हम जैसे लोग भी कुछ अगर बोल रहे हैं, तो उसको आप समझने की कोशिश करिए कि ये क्या जो बात कही जा रही है वो आपके समझ में आ रही है कि नहीं। जो निवेश आपको समझ में नहीं आती है वो ना करें। और कई लोगों का लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तिरछा जा रहा है, कुछ करने की जरूरत है। कई बार कुछ ना करना भी एक निर्णय होता है। तो डूइंग नथिंग इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसका मतलब जस्ट बिकॉज मार्केट में उतार चढ़ाव, हम लोग बोट में जाते हैं, नाव में जाते हैं, पानी तो गोते खाती रहती है। इसका मतलब क्या हम बोट में उछल कूद करते हैं, हम एक जगह बैठे रहते हैं या कुछ और करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो आपके चारों तरफ हो रहा है उसी के साथ तालमेल मिला के आप अस्थिर हो जाएं। तो ये दूसरी बात है। उससे भी उतना ही इम्पोर्टेंट ये है कि आप जब निवेश करते हैं, आपको ये पूछना पड़ेगा खुद को कि ये निवेश किस कारण किया जा रहा है। कोई जरूरत है,
चाहे रिटायरमेंट हो, बच्चों के एजुकेशन, घर बनाना चाहते हैं, बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, जब आप एक गोल, एक जो डेस्टिनेशन के साथ आप अपने निवेश को जोड़ देते हैं, तो मार्केट के उतार चढ़ाव होने पर भी आप अस्थिर नहीं होते हैं, विचलित नहीं होते, क्योंकि आपको मालूम है, अगर मेरे को मालूम है कि मेरे को पैसे 15 साल बाद चाहिए, तो अभी और मैंने हर महीने 1,000 रुपए निवेश कर रहा हूं, या मैंने हर कुछ महीने में निवेश करता हूं, तो मेरे को उस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर मार्केट मान लीजिए उछाल भी होती है, अगर 10,000 रुपए अभी तक निवेश हुआ है और वो 10% बढ़ता है, तो वो 1,000 रुपए तो आप गेन कर रहे हैं। आपको चाहिए, मान लीजिए 10 लाख रुपए चाहिए या 5 लाख रुपए चाहिए, 10,000 में 1,000 रुपए गेन करने के लिए जो 15 लाख का टारगेट है, उसको आप खराब क्यों करेंगे? तो ये हमें देखना पड़ेगा कि एक रिस्की डिसीजन लेने में आपके फाइनल गोल को जो आप करना चाहते हैं पैसों से, निवेश से, वहां पे पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। और दूसरा है कि सही जो बेंचमार्क है वो कंपेयर करें। ये नहीं कि पता चला कि आप शेयर खरीद रहे हैं, आप उसको कंपेयर कर रहे हैं सोने के दाम के साथ। जो एप्पल टू एप्पल, जो सेब जब आप खरीदें, सेब का सेब के साथ कंपेयर कीजिए ना, उसका तरबूजे के साथ करेंगे तो कैसे चलेगा। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो जिससे दूर रहना है। और इंडिविजुअल जो इन्वेस्टमेंट शेयर में अगर देख रहे हैं तो कंपनी में देखिए कौन से यहाँ इस माहौल में अर्निंग्स विजिबिलिटी है कि ना, क्या आपका So what you're saying is one has to be wise about. Yes, one has to be discerning. देखिए आप when we go to buy a shoe, हम पहन के देखते, we wear the shoe, check it out. Why not for investment? Why are we, even bothering about what others are saying? Okay, let's look at the policy review that's coming up tomorrow, and there are two scenarios to it. The RBI's one view is that RBI is unlikely to change its stance to neutral from withdrawal of accommodation, to keep the door open for keeping liquidity surplus in the system to be mildly positive and remain growth perspective. The other thing is that for high frequency indicators suggest that growth continues to hold up, and therefore the bank can afford to hike rate somewhat from the current level. What's your view? Which part are you taking? Very briefly. Well, I like everybody else, I guess there's going to be a mild increase. At some point, I expect RBI to sort of get into neutral territory. They won't say that we are stopping or something. Start indicating that if something like this happens, they will say something like a data dependent or evidence based, something like that, something which every central bank is saying. And they are going to get the data, Rajesh, because things haven't gone out of hand in terms of inflation. And good for us. There's nothing also in the horizon. Like, if the oil prices were on fire or something like that, we have been used to slightly higher figures. So as long as something like that doesn't happen, we can expect. I'm not expecting a nasty surprise. I'll be very surprised. जी, अब रुक करते हैं वैश्विक शेयर बाजारों का। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजारों की बात करें तो आज एशियाई शेयर बाजारों में कारोबार मिला जुला रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.5% और हांगकांग का हैंग सेंग 0.4% लाभ में रहे। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.3% का उछाल दर्ज हुआ। वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.15% के नुकसान के साथ बंद हुआ। जापान का निकेई बिना किसी उतार चढ़ाव के लगभग सपाट बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजारों में भी मिला जुला कारोबार देखा गया। अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान लंदन का FTSE 100 0.6% चढ़ा, जबकि जर्मनी का डेक्स 0.1% के नुकसान में चल रहा था। फ्रांस का कैक बिना किसी उतार चढ़ाव के सपाट कारोबार कर रहा था। And in the US, stocks ended lower yesterday as investors were in a dilemma over the possibility that the US Federal Reserves may take longer to start cutting interest rates. Traders kept a close eye on speeches by Fed officials, including Chair Jeremy Powell, for any major changes in central bank's rhetoric after data last week showed services activity was strong in January, along with strong job growth. The Dow Jones Industrial Average fell 0.1%, the S&P 500 declined 0.6%, and the Nasdaq Composite Index lost 1%. Udayan,
what is going to be on this dilemma? Will they? Will they not? They will keep doing it because, Rajesh, what basically is happening is inflation in the US is coming down. But the prime cause for that inflation, which is wages, because the job market is so good, unemployment, the ratio is for every person available, there is 1.8 jobs. So that is what is causing the inflation. It's not inflation for, it's not the job. When we are talking about jobs, it's very interesting. It's not the white collar jobs. So you're seeing layoffs happening in tech companies, but dare somebody point out to me about any information about layoffs happening in hospitality, dining out, services. So what's happening is all these blue collar sort of jobs within quotes, they are in high demand, and that is the area which is making that inflation very, very obstinate, and it's sticky, and that's why it's going to take time, because till they are actually Federal Reserve is on record, they're watching that. Till they see that softening up, Rajesh, you can expect Fed to continue. It'll probably go in this 25 basis point trajectory, but they're looking at that. That's a key factor for them. So, also coming back quickly to Asian economy, everyone is waiting for Chinese economy to bounce back. But some experts are saying that Asia is likely to witness a sharp slowdown despite the bounce back by the Chinese economy. That's quite possible. I mean, last year is basically a write-off, 2022, because of all the things. But also the fact is, Rajesh, China will be primarily dependent on their domestic consumption, simply because things have cooled down quite a bit in Europe, although it's not gone where people were fearing. US is slowing down, and these are their primary markets. So if your factory is dependent on these markets, then naturally there's going to be a moderation. So that's why what the experts you're quoting, they are correct. Okay. Moving on, the oil prices rose for a second straight session today, driven by optimism about recovering demand in China and concerns over supply shortages following the shutdown of a major export terminal after an earthquake in Turkey. In intraday trade, Brent crude was trading at $82.42 per barrel, while WTI crude price was at $75.57 per barrel. Again, what's your view quickly on the oil prices? A lot of it will depend on the kind of headlines you're going to get from the US and particularly China, Rajesh. जी, और अब बात करते हैं कीमती धातुओं की। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अप्रैल अनुबंध के सोने की कीमतें आज 23 रुपए बढ़कर 56,978 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रही थीं। मार्च अनुबंध वाली चांदी 126 रुपए टूटकर 67,273 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,881.20 प्रति औंस पर चल रहा था। चांदी भी $22.21 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में देखें तो सोने में मंदी है, $1,881 प्रति औंस पर चल रहा है डॉलर में सोना। और यहां हम घरेलू बाजार की बात करें तो तेजी देखी जा रही है। रुपए में जो गिरावट आई है रुपए डॉलर में, वो एक्सप्लेन करता है इस चीज को। जी, उद्यन आप कार्यक्रम में शामिल हुए और इतनी उपयोगी आपने चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you for being with us today. And before we close, the headlines once again. Domestic stocks witnessed losses of less than 0.5% amid mixed global cues. Sensex ends below the 60,300 points. Nifty settles near the 17,700 level. The rupee appreciates to 82 paise and 70 paise against the US dollar. And global crude prices rise to trade around $82.42 per barrel. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.